I have the hope. There's a prayer like that, right? I don't know exactly if I said that, but something like that. Oh Gopi Janmal. So, so we are all dependent on Krishna's mercy. Actually, every day, day to day, we are getting our necessities of life, everything, and we are living. All this is based on Krishna's mercy. Okay, here the words Priya Janan Anusevatam Naha indicate that the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is very favorable to devotees who act according to the instructions of his own pure devotee. So Krishna is kind to everyone, but he is especially very favorable to devotees who act according to the instructions of his own pure devotee. Like if there is a father and he has a few children, and if one child is very obedient and submissive and always takes care of the father, then the father is naturally inclined to that child. It is not partiality because everybody can be like that. So, in other words, one must become the servant of the servant of the servant of the Lord. If one wants to become the servant of the Lord directly, this is not, that's why we say each other as Prabhu, you are my master, I'm your servant. That's the meaning. You are Prabhu, I'm your servant. If one wants to become the servant of the Lord directly, this is not as fruitful as engaging in the service of the Lord's servant. Krishna says, those who are devotees, my devotees, they are not my devotees. Those who are devotees of my devotees, they are my devotees. This is the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu who shows us the way to become Gopi Bhartu Padakamalaya or Dasa Dasanudasa. One should not be proud of becoming directly the servant of the Supreme Personality of Godhead. Rather, one must seek a pure devotee, a servant of the Lord, and engage oneself in the service of such a servant. The more one becomes the servant of the servant, the more one becomes perfect in devotional service. This is also the injunction of Bhagavad Gita. So, one definition of Kanishta Adhikari is that he just considers the deity and himself to be the devotee of the deity, but he does not know how to behave with other people and like that. That's Kanishta Adhikari. Archaya Mevaharaye Pujam Yah Shraddhayanvitaha Natat Bhakteshu Chanyeshu Sabhakta Prakrita Smitaha. It is described like that. So we have to also recognize not only the Lord but his devotees. And everybody is part and parcel of the Lord. So we know how to behave with everybody. The more one becomes the servant of the servant, the more one becomes perfect in devotional service. This is also the injunction of Bhagavad Gita, evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu. Like they say, if you love me, love my dog, right? So, daya sarva bhuteshu santushta yena kenava. Then, आत्मेन्द्रिय प्रचन्ते च तुष्यते आशु जनार्दन. so we have to be kind. That devotee is very kind. Maitra adveshta sarva bhutanam. Maitra karuna evacha. Nirmamo nirahankara. Samadukha sukashami. That in 12th chapter also Bhagavad Gita Krishna is saying. Non-envious. Adveshta sarva bhutanam. Maitra karuna evacha. Friendly and like merciful. So this is also the injunction of Bhagavad Gita. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. One can understand the science of the Supreme Personality of Godhead simply by the parampara system. In this regard, Srila Narottam Das Thakur says, Tandera charana sevi bhakta sanevas. Let me serve the lotus feet of the devotees of the Lord and let me live with devotees. Because if you live with devotees, then you will get a lot of inspiration and you will have a regulated lifestyle. There will be discipline in your life. That's the advantage of living in the association because we feel encouraged when, like we are reading this Bhagavatam, right? On our own, it may be difficult, but since everybody is together, so we are discussing, you are sharing, I am sharing something, we are reading. So this is very nice. And Kali Yuga especially, it's very difficult to practice devotional service alone. So we need association. So let me serve the lotus feet of the devotees of the Lord and let me live with devotees.
Janame Janame Hoy Ei Abhilash. Following Narottam Das Thakur, one should aspire to be a servant of the Lord's servant, life after life. Srila Bhaktivinoda Thakur also says, Tumi to Thakur, Tumara Kukur, Boliya Jana Hamore. How does it go? Sarvasva Toma Charane Sam. चरणी संपिया पड़ीछे तुम्हारा घाटे তুমি তো ঠাকুর তোমারা কুকুর বলিয়া জানা হুঁ। So we'll sing after. Oh my Lord, oh Vaishnava, please consider me your dog. Oh, one must become the dog of Vaishnava, a pure devotee. For a pure devotee can deliver Krishna without difficulty. Krishna she tuma, Krishna dite paro, tumara shakatiya je. Ami to kangal, Krishna Krishna boli, daitava pache pache. Krishna is the property of his pure devotee, and if you take shelter of a pure devotee, he can deliver Krishna very easily. Prahlad wants to engage in the service of a devotee, and therefore he prays to Krishna, My dear Lord, kindly give me the shelter of your very dear devotee, so that I may engage in his service, and you may then be pleased. So everybody is devotee, and then there are pure devotees. So there are devotees at different levels of purification of heart. But we should serve all the devotees. And the pure devotees who have fully dedicated their lives, giving aside everything else, considerations to engage in Krishna's service. Mad Bhakta Puja Abhyadika. Of course, whether it doesn't mean you have to live in temple or full time, but anywhere, anybody can be a devotee, pure devotee. Bhaktivinoda Thakur was a magistrate and he was a pure devotee. He had his job and everything. Mad Bhakta Puja Abhyadika. Adhika means more valuable. Mad Bhakta Puja. The Lord says engaging in the service of my devotee is better than trying to engage in my devotional service. Another significant point in this verse is that by devotional service, Prahlad Maharaj does not want to benefit alone. Rather, he prays to the Lord that all of us fallen souls in the material world may by the grace of the Lord engage in the service of his servant and thus be delivered. So again, Prahlad Maharaj is saying, us, show us you will show causeless mercy to persons like us. Means he's not saying me, but he's saying us. So means he wants others also to get the mercy. By the grace of the Lord, engage in the service of his servant, and thus the grace of the Lord is not at all difficult for the Lord to bestow. And thus Prahlad Maharaj wants to save the whole world by spreading Krishna consciousness. Okay. So this is the mood of Srila Prabhupada, like Prahlad Maharaj. He wants to save the whole world. And we can become instruments in Prabhupada's like desire, compassion. We can become instrument of Srila Prabhupada's compassion by giving his books and inspiring others in devotional service to chant, to associate with devotees. So, any comments on this verse? Okay, we can sing a bhajan if you. Anybody want to sing it? Oh, I have to read the prayer here. Yeah, you can read the prayer of Rupa Goswami. Yeah, yes. I have no love for Krishna, nor the causes for developing love for Krishna. Mainly hearing and chanting in the process of Bhakti Yoga, in which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart, is also lacking in me. As far as philosophical knowledge or pious words are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. Above all, I am not even born of a nice family. Therefore, I must simply pray to you, Gopijan Vallabh,
I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet, and this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. Any comment? Yeah, so humility that I am so far away from you, Krishna, but I am determined to reach to you, right? Like we were talking about determination of Yashoda trying to bind Krishna, right? Um, some other example also we discussed yesterday, determination. Yeah, But he was yeah, saying that even though I have all the, I'm not able to control, but I'm determined. He was saying a verse from the Bhagavatam. He said, "This is the thing you should remember." oh yeah, I think that verse is having awakened faith, right? 'Cause I don't know what verse he was saying. Yeah, like some devotee. Yeah. That's the verse that having awakened faith in narrations, being disgusted with all material activities, and knowing that I cannot give up sense gratification. I'm still, but I will not give up. Hmm. The devotee remains always optimistic and remains happy and keeps on going. Keeps on trying, yes. Yeah. So, so humility, of course, here he says, I have no love for Krishna. Another place he says, oh, this is no nor for hearing and chanting. And another place, Rupa Goswami says, oh, this is so nectarian. This holy name has produced so much taste. Right? I don't know, like that. So both are from Rupa Goswami only. So he's feeling Tunde Tandavani, that verse. So and here he's saying, but yesterday they're discussing, yeah, humility means, yeah, it will bring you closer to Krishna. So I don't have this, but I really need you, Krishna. So you really desire Krishna very ardently. Yeah, like we say, the more closer you get to the mountain seems bigger. The more you know about Krishna, the more you know how much you don't know about Krishna. Or as you advance, you find out I'm so fallen, I'm so many anarthas in me. The more we advance, but these are pure souls. They are taking the role of a conditioned soul, so we can relate to them and see the prayers that they are saying. Right? So Bhaktivinoda Thakur and Narottam Das Thakur, they have written it for us. Those prayers. Yeah, to feel helpless, but then to depend on Krishna. Right? Humility means to feel helpless, but then to take shelter. If you're helpless, then you take shelter. So both things are there. Yeah. Like there is a tornado warning, right? So sometimes in our office you go down into the shelter because there is a tornado coming. So it's dangerous. So like more you feel you're helpless, it doesn't. The more you feel like I need shelter because I'm helpless. So in that way, both. So it brings you closer to Krishna, right? That kind of. And yeah, he was also talking about self care. Self care means to take care of ourselves in such a way that we come closer to Krishna. It should not make us depressed or anything like that. So that we are not enthused in devotional service, but we have positivity in our life and hope in Krishna's mercy. That's the positivity in this. Although he's saying, I don't have this, I don't have this, but there is positivity in Krishna's mercy. That, yeah, Krishna will give me mercy. So, like that. Also, otherwise, we can become very, what you can say, depressed and not be able to do anything and lose all hope. Okay, so we can sing this song, put it here. I have a comment, bro, Yeah, go ahead. Yeah, if that's okay. go ahead. Yeah, no, I have a comment on this verse that you are reading. I Uh-huh. was thinking that the Prahlad Maharaj is also is asking for the association of
pure devotees, and we see that all the pure devotees asking for association of devotees, mm, and like Bhakti Vinod Thakur, Narottam Das Thakur, Vitrasur, I mean all the pure devotees is asking for the association. And in somebody has quoted, like even the verses also, right, is saying durlabho manaso deho dehi nam chhan bhangur tatrapi durlabham manye vaikuntha priya darshanam, right? The rare, I mean, human life is rare, mm, difficult to achieve. But even more rare is getting the association of the pure devotees who is very dear to the Lord of Vaikuntha. So even in the five limbs of bhakti, the five important among 64, the sadhu sangha comes first, right? Even before Nam Kirtan also comes second. Sadhu Sangha comes first. Now Sadhu Sangha, Nam Kirtan, then Bhagavad Shravan, Mathuravas, and Sri Murtira, Shraddhaya Sevan. So association of devotees in, I heard from somewhere back that in Hari Bhakti Vilas there's a very nice statement is written that um, by the association of a devotee, even a dog, uh, even the dog type of character, I think, is saying that like can develop attraction for Lord Krishna. So I mean those who are very low, but they if they come in association of a devotee, they can develop the attraction for the Lord Krishna by hearing them, by associating with them. Of course, it's not just association. We should hear from the pure devotees, and that words create an impact on and create a transformation in one's, consciousness. And other point I was thinking that um, Prahlad Maharaj was very humble in all his prayers. It shows his humility, and in this prayer is talking about compassion also, right? They're like how Srila Prabhupada also very compassionate. But otherwise, he was sitting in Vrindavan, he was doing his bhajan, and there is no need to come in the Western world where there is no, even many people don't even heard the name of Krishna. mm, So at that time, the culture was completely different. They are more drug addict kind of person here, but he come and just with the Bhagavatam, and because of his compassionate nature, because the devotees can see, they could see the suffering in this material world, and they eagerly want to share this Krishna conscious knowledge to everyone. So let the whole world will be delivered. We have some examples also, right? Vasudev Leper, isn't that who said that, I who changed the ways to not in come in contact. I mean something is what he was saying that compassionate that let everybody get delivered. mm. I can get That's sufferings from. Vasudev Dutt. Vasudev Dutt, Yeah. not Oh, Vasudev Vasudev. Letter. Okay. Thank you. And even there's another story also we read in our evening classes, like the story of a Janak Maharaj, that when he goes to the hell, he saw that how the in the hell they were suffering with many kind of, you know they get the sufferings for their own reactions, but he was saying that, let me chant the name, and I will let everybody get delivered from this suffering. I will take it because I will chant the name of Lord Ram, right? So I mean they are very compassionate to seeing the sufferings of others, and when someone come in contact with that pure devotees, it's yeah, I mean one can make oneself free from this. And even pure devotees have, I think somewhere in the purport is saying that, um, right, is saying, what is saying that I am in control of pure devotees, right? So different languages there in the purport. So we see that even Krishna took avatar, he incarnate in the world by the prayers of a devotee. Like Advaita Acharya was praying and Chaitanya Mahaprabhu come in this world. Even all the, like, Krishna comes to protect their devotees, right? But they are pure devotees of the Lord. And I heard, um, I heard first time there's a there's a song
Bhaktivinoda Thakur from Sharanagati, Vaishnavere Avedan. Something is like that. He's saying that is somebody anybody heard this song? Um, Vaishnavera Avedan. Avedan. I can share that song. He's saying that like you are ocean of mercy, please give me your mercy. Uh, uh, I search that song and find it out again. But yeah, that is a song for the Vaishnavas. I mean, they are I pure think this is devotees the and they song. are. Kabe Sri Chaitanya More Kari Be Nade Kabe Ami Paibe Vaishnava Pada. Is this the one? Um, Okay. let me see. Anyway, yeah, go ahead. Sorry. Yeah, no, I'm just saying that no, this is I mean, this is a potency of a pure devotee, right? And we cannot approach Krishna directly without going through the pure devotee. We say that we're taking shelter of Radharani first. Radharani is the greatest devotee of Krishna. So we are taking shelter of Radharani, or if somebody approaches Ram, so take shelter of Mother Sita. So without taking shelter of a devotee, one cannot approach Krishna. So, yeah, I'll share that song. Yeah, it's Thank you, here. Prabhu. Give me these arms. Vaishnavera Avedan Krishna Dayamoy. E Hena Pamar Prati Havena Sadai. That's maybe it's a line. Okay, you can share the song. But okay, so let me put this. Service. Yes, true. सर्वस्व तोमार चरणे संपिया পড়িছে তোমারা ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমারা কুকুর বলিয়া জানাহু মোরে বাঁধিয়া নিকটে তোমারে পালিবে रहेबो तुम्हारा द्वारे प्रतिपाजने रासिते न दीबो राखिबो गडेरा पारे तव निज जना प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखिबे जहाँ हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हाबे तहाँ বসিয়া শুইয়া তোমারা চরণ চিন্তিব সতত আমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি নিজেরা পোষণ কবু না ভাবিব রহিব ভাবেরা ভরে ভক্তি বিন তোমারে পালকা বলিয়া বরণ করে সর্বস্ব তোমার চরণে সম্পিয়া পড়েছে তোমারা ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমারা কুকুর বলিয়া জানাহু মোরে Translation. Now that I have surrendered all I possess, I fall prostrate before your house. You are the Supreme Lord. Kindly consider me your household dog. Chain me nearby and maintain me as you will. I shall remain at the doorstep and allow no enemies to enter your house. I will keep them at the bounds of the moat surrounding your home. Whatever remnants your devotees leave behind after honoring your prasad will be my daily sustenance. I will feast on those remnants with great ecstasy. While sitting up, while lying down, I will constantly meditate on your lotus feet. Whenever you call, I will immediately run to you and dance in rapture. I will never think of my own maintenance, but rather remain transported by a multitude of ecstasies. Bhaktivinoda accepts you as his only support. So this is Sharanagati prayer, Gopatritve Varana. Means Krishna is my maintainer. I am a dog of Krishna or dog of devotees. And dog, is totally relying on the master to supply him everything.
So the dog cannot do anything. So he does service to the master. So this is what, and we say our Tulsi Mala is like a dog collar, right? So he's saying that this is your home, Krishna, and I'm going to protect your home. Let nobody, no enemies enter your home. And I will eat the remnants of the devotees. So Bhakta Pada Dhuli or Bhakta Pada Jal, Bhakta Bhukta Avashesha Teen Mahabal. So the food which is the remnants of the devotees, and the dust from the lotus feet of the devotee and the water that has washed the lotus feet of the devotees, these three are powerful things, so that we will quickly advance in Krishna consciousness. And we have so many pastimes like that of the air hostess, right, who took some remnants of Prabhupada and she became a devotee just with that. And I will immediately run to you when you call out to me. So very alert. And dog is very faithful and he's very alert to the master's need. So whenever Krishna wants us to do something at once, and I will never think of my own maintenance. Krishna, you are maintaining me. You are my only support. Prabhuji, you can add further. Yeah. It gives freedom from anxiety when you depend on Krishna. Right? So, Krishna is my well wisher and he will provide whatever is good for me. So, so then you don't feel anxiety. When you have shelter, you don't feel anxiety. You can be happy. You can live happy life without anxiety. Okay. Dog has a quality to be loyal to the master, right? So, yeah, I mean, this is also said that one pointed attention, one pointed devotion to his master, as like a dog. Dog has this quality. So, Dog will never give up yeah, its master, right? Even in difficult right. times or whenever. Hmm. Faithful dog will always protect the master. Yeah. That's why people keep I dogs. mean, mhm. We say that we always remember Krishna in every situation, right? In distress and in happiness. Yesterday I was reading 10th canto, and in that chapter there is Ras Leela's chapter. I was there, and it struck me very nicely that there's I mean, there's just a translation in most of the verses, and he's saying that when Krishna was when when the gopis were dancing and they were happy with Krishna in presence of Krishna, and they were glorifying Lord. They are glorifying Krishna. They started glorifying Krishna. So it is beautiful that the gopis are in any situation, even in the distress situation when Krishna was not there and when he absent, then they were like, so much in absorption with Krishna. They were even enacting the pastime of Krishna, and when the Krishna present, they were joyful. So in the both the situation, either in distress situation or in the happiness situation, they were just glorifying Krishna. So I mean, we can learn in any situation, we to take shelter of Krishna and we try to glorify, because nothing is more pleasing or joyful by just glorification of Krishna. So yeah. So if you feel like that, then you're liberated. Right? If you feel that other than Krishna's service, there is no other happiness other than, yeah, hearing about Krishna, chanting about Krishna, remembering Krishna, serving Krishna, then you're liberated, right? That's other than that, there is no other anything valuable. So, okay. So we do. So of course, the devotee does so many activities, but he does with this mood that it is all for Krishna. So the next verse we'll read. This is like famous verse, which uh, which is the basis of our Krishna consciousness movement. This verse and the next verse. So we'll quickly
quickly read this and then we'll hear something. नैवो द्विजय परा दुरत्यया वैतरण्यस त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ा. So Prahlad is saying, O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence. For wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. So we should remember Krishna. That's the highest instruction. And yesterday, Mahatma Prabhu was telling that you can remember if you want. Like he said, close your eyes and think of what? A purple elephant Purple elephant with pink shoes, with pink shoes and a golden uh, glass like sunglasses, pink sunglasses. no golden this thing around his neck Huh. and Mm-hmm. and wearing ribbon glasses or something. Mm-hmm. Yeah. He says, can you think of an elephant like that? So immediately everybody closed their eyes. And he says, if you want to think, you can think. Like if you instruct your mind, mana shiksha, and you say, mind, now think of Krishna's pastime. Let's close our eyes and think of Krishna's pastime, whichever pastime. All pastimes are good only. And whichever your favorite pastime is. So whatever you are attracted to. And you can think of multiple pastimes or Lord Chaitanya's pastimes. So we can, if we want, we can deliberately think of Krishna's pastime. So just like we can think of an, so we can tell we are not the mind. We can instruct the mind and we can tell the mind. So like here is before me there is picture of Lord Chaitanya doing Sankirtan. So I can remember Krishna, Lord Chaitanya doing his Sankirtan and how he's dancing and with all the devotees chanting Hare Krishna. And then one pastime that can come to mind is when he was chanting like that, there was another old Brahmana who joined him in the chanting. Like in Chaitanya Charitamrita, there is a, when he goes on his tour of South India, I think, then he meets a Brahmana and he starts chanting, and both of them are chanting in ecstasy. So, like that, everything can remind if you have read, if you have heard Krishna's pastimes, then we can we can think of Krishna's pastimes and all the details of Krishna's pastimes. So, so we can instruct our mind and we can think of Krishna. So mind is in our control. I mean, if we want to control it, we are mind is subordinate to us. So here Prahlad is saying, "O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence. For wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities." And initially we practice, and then when you have natural love, then it becomes spontaneous. You don't even have to tell that you think now like that. It automatically, like when love is there, you can't, like Rukmini, she could not stop thinking of Krishna because it became very spontaneous attraction to Krishna. So, so we are in the Vaidhi sadhana bhakti stage. So we have to deliberately, by concern, sometimes we may think it is artificial, right? This is all artificial. I'm trying to remember Krishna artificially. I'm trying to chant Hare Krishna. It's artificial. I don't really have taste, but I'm trying to, act as if I have taste. So, yeah, because we are told by Shastra and we have faith in Shastra that in our natural state we are spontaneously attracted to Krishna. So, Prabhupada says it is not an artificial imposition on the mind. So, by practicing, we'll come to the actually our natural state. So, and of course, the mercy of the devotees will accelerate that.
My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families. Societies and countries, I am simply concerned with love for them. So it is not wrong to maintain family or anything, but we should not forget the goal of life. Basically, he is saying there are people who completely get absorbed in their family and as if this situation is going to last forever and we are going to be around here always together. So we are all spirit souls. We have come in our family by the force of our karma for a certain period of time and then everything will change. So every soul is on journey back home, back to Godhead. So in our family, we should help each other, right? So Prabhupada says in family, you should chant Hare Krishna with your family members. You should read scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam. You should offer whatever you cook to the deity and honor prasadam together. This is four things he says you should do in family life. So, and if others in family are not interested, then that's okay. We can do ourselves or we can find other devotees with whom we can do. So ultimately, yeah, this is the. So he is saying, I'm not afraid because I'm absorbed in you. And if I'm absorbed in you, I'll go back to you. So I'm not afraid. Throughout the entire world, he is afraid. Previously, he said he's afraid of forgetting him, the Lord. So, but sometimes we may think, well, if I remember the Lord, will I be able to do my work in this world nicely? How will things go on? You know? So, what is the answer to that? If I think of Krishna and if I become too like people say, don't go too much into ISKCON, right? You just go to temple and come back. Don't go too much into the philosophy. Don't go like too deep. You have to do your other duties and everything, and just go once in a while. Don't go too deep inside that, right? So, is that true? Is that good advice or not? What do you think? Because if you go too deep inside, then you may lose interest in so many other things of this world. And to live in this world, you have to take interest in those things. What would you say? Somebody gives advice like that. Is that correct advice or wrong advice? No, it's a wrong advice. If you want to become perfect in something, then you have to go deep in it. We want to become perfect in our love for Krishna. So, Hmm. and anyways, this material world will not help us at our time of crisis. We have to leave everything behind. And so even if we, do so many things of this material world, build our assets and homes and bank balance, what is the use of it? We have to leave everything behind. Only thing that will come along with us is our bhakti credit. Hmm. How much we have chanted the holy name, how much love we have developed for Krishna. So what is real? The rest everything is illusion. But we should do our work properly. Means like somebody told me that Prem Vilas Prabhu, he is a great devotee, but when he takes the coat of a doctor and he's in the hospital, he's a great doctor. He's focusing on his patients, he's doing his stuff. Not that he's partially thinking of we. I mean, he's doing this service for the pleasure of Krishna, but while we are at work, we do our work properly Yeah. as a service to Krishna. Especially in medical field, you cannot be negligent. Otherwise, finished. There can be a court case against you, and you can Yeah. lose your license and so many things. Yeah. Or worse, you can harm somebody, right? Yeah. And some person can You lose can their mess up. life Yeah. The life may be like in or jeopardy. give them suffering. Correct. But yeah, any And profession. also, if you, Go ahead. yeah, yeah. Go- No, I was saying that in any profession, I mean, you cannot be negligent. Other thing that if we, I think like that when come in Krishna consciousness and read the philosophy, we do our duty much better than before because we get to know so many things that how one should be, what kind of qualities we need to develop. One should not be envious. We should not, we help each other, we kind each other.
We compassionate to each other, we serve each other first thing. So before then we are not thinking much of these things, but when we read this philosophy, we try to serve actually others, and we don't indulge in so many other things which is not necessary for even for our personal growth, also for mental peace also. So when we get this knowledge, we do our things much better than before. And other thing, that if we think like everything, if we not every time we can see Krishna in every person or in every activities, but we try to, because without reading, without going deep in the philosophy, we cannot even see Krishna. So we try to see Krishna in our activities, in other person. Of course, Krishna is present in as Paramatma in every living souls. So yeah, we try to change our vision, spiritualize our vision, and see things with that vision. So that helps in materially growth also. Thank you. Okay, so we'll read the purport. Throughout the entire world, everyone is making big, big plans to adjust the miseries of the material world. And this is true at present, in the past, and in the future. So much research is going on to find cure for many diseases like that. So much research. So Prabhupada is talking about that. In the past also it happened, in the future also, at present also. There is big, big plans. Of course, the to avoid death, right? To stop it, old age. There must be so much research going on. Nonetheless, although they make elaborate political, social, and cultural plans, they've all been described here as Vimuda. Vimuda means Vishesh Rupena Muda. Muda means fool. A specific fool. Fools. The material world has been described in Bhagavad Gita as Dukhalayam Asashvatam, temporary and miserable. But these fools are trying to turn the material world into Sukhalayam, a place of happiness, not knowing how everything acts by the arrangement of material nature, which works in our own way. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Of course, for devotee, everything is wonderful also. We say like that. But it is also bad because we have to go through disease, old age, and all the troubles. And there is no solution. You cannot stop it by technology, right? So that's basically by technological advancement or research, you cannot stop death. Now people say, well, we have found cure for COVID, right? Because we had COVID vaccine. So if we didn't do the research, then how would all these diseases be stopped? Yes, that is true. Like tuberculosis before didn't have any cure. Now they have cure. But still people are going to die. So that's there. So and many times vaccines also have side effects, right? So I don't know. Some people are saying this COVID vaccine, they didn't take COVID vaccine. So many people didn't take because they think this is not. There's some controversy about it. I don't know if it's true or not, but they say so. Everything has side effect also, and you can prolong life, but the quality of life may also not be good. So does it mean that there should be no research done, like for all the diseases, and should all scientific research stop? No, it's not saying that, but the thing is that we have to remember that even with all this scientific research and everything, we still have to die. That's a given. And we can get incurable diseases, and so things will not work. That's what Prabhupada is saying here. We can do to mitigate miseries, we can, but the real way of mitigating misery is to like not come back into this material world and get a material body. That's a spiritual way of mitigating misery. So because we don't belong here, so that's the way. Means change your consciousness, then you die, and then after this life you don't. But then you you have to have faith in this thing that after this life. Sometimes people say, who knows?
where anybody has, after death, has anybody come to tell you, where they have, where there is no communication, right? Where they have gone, nobody knows. Of course, first you have to accept that you are not the body, you are the soul. If you don't accept that, then with the death, everything is finished. That's it. There's no more life after. But many people will at least accept that there is something beyond this body that gives life to this body, and that life continues on. But then where it has gone, who knows? Where the soul has gone, which life form, where, whether it went back to Godhead. So there is also like that kind of skepticism that comes about. So yeah, so faith in Shastra, that if we, Krishna is saying, right, that if you remember me, if you become my devotee, then you'll come back to me. I promise you. What is that verse? Manmana bhava mad bhakto, manmana bhava mad bhakto, madhyaji. Madhyaji Mam Namaskuru. Mame Veshati Satyam Te Pratijana Priyasmi. I promise you. Because you're my. So that's where faith comes in, right? So with faith, we can actually progress. But and faith also comes by seeing those who have faith, right? We see Srila Prabhupada and so many devotees, and they are speaking so very, and their life is like their. So devotees association also creates faith. Of course, it's not necessary because sometimes people think these people have been brainwashed. Yeah, like they say also like that these people are just brainwashed. So it's a very difficult thing to get faith. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities that are in actuality carried out by nature. But everybody will agree that we have to die, right? So that's, I mean, even anybody you ask, they will say yes. So that means this is temporary thing, and most people will agree that we are not this body. There is soul, then the soul is eternal. So there is a plan for material nature, personally known as Durga, to punish the demons. Although the asuras, the godless demons, struggle for existence, they are directly attacked by goddess Durga, who is well equipped with 10 hands with different types of weapons to punish them. She is carried by her lion carrier, or the modes of passion and ignorance. Everyone struggles very hard to fight through the modes of passion and ignorance and conquer material nature. But at the end, everyone is vanquished by nature's laws. There is a river known as Vaitarani between the material and spiritual worlds, and one must cross this river to reach the other side or the spiritual world. This is an extremely difficult task. But if we chant Hare Krishna, we can cross. As the Lord says in Bhagavad Gita, Devi Esha Gudamayi, Mama Maya Durattaya. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. And we can see how the modes of nature are so strong, right? They have a grip on us. So one thing is, yes, he was saying yesterday that you have to just let go. Let go. You are holding on to it. That's from our side. And then Krishna's mercy also helps us. The same word duratyaya, meaning very difficult, is used here. Therefore, no one can surpass the stringent laws of material nature except by the mercy of the Supreme Lord. But if we should want to get out also. Nonetheless, although all materialists are baffled in their plans, they try again and again to become happy in this material world. So why they are baffled? Sometimes people say we are not baffled in our plan. We are getting nice salary, but eventually we are unsuccessful, right? Because we have to leave. Therefore, sometimes people also say, why are you thinking about death? Live life, life is meant. Uh, Death is just an event that happens. Maybe last 1 or 2 years you are sick in your life, but you have 70 years of life. So why don't you live happily and enjoy? And why are you thinking about the last, few years, which may be a little troublesome? But you got so many years to enjoy. Why don't you enjoy now? Which Prabhupada also said, yes, goal of life is to enjoy. So we are meant to enjoy.
but in the right way. That will not give us, that will liberate us from the cycle of birth and death. So that's the, there is no denying of enjoyment, but because by nature we are anandamaya abhyasat, we are seeking pleasure. But how to seek pleasure? So of course, we may not get pleasure in chanting Hare Krishna. We may not get pleasure in Krishna's service. We may get pleasure in so many other things. That's when it becomes difficult, right? Because we may be attracted to so many other things, but not to devotional service, and it may not be so pleasurable. We are doing it because we know it's good for us, but on our mind there are other things that give us pleasure, right? So we are doing it in a regulated way, but then slowly, gradually, it should give you pleasure, right? That's the idea. Rasovarjam, uh, verse, slowly and gradually it will should give you pleasure. Rasovarjam, rasopiyasya param drishtva nivartate. Right? That's what it is. And if it is not giving pleasure, then means something is wrong, or because we are heavily conditioned. So that is why also it doesn't give pleasure immediately. Those who are Krishna conscious trying to serve the Lord are not unhappy, whereas one who has no assets in Krishna consciousness and is struggling for existence is not only foolish but extremely unhappy also. Prahlad Maharaj was unhappy, happy and unhappy simultaneously. How can you be happy and unhappy together? That's not possible. He felt happiness and transcendental bliss because of his being Krishna conscious, yet he felt great unhappiness for the fools and rascals who make elaborate plans to be happy in this material world. Okay, so we'll stop here. Anything else you want to say? Anyone would like to say? In this verse, is saying that it is very difficult to cross the material modes of nature and this ocean. Hmm. But there's a verse, right? Samashritaya, ye padpada pallavam plavam, mahat padam punya yesha murari. Avam buddhi vats padam param padam, padam padam yad viptam natisam. Hmm. Right? It's like for those who have accepted the lotus feet, both of the lotus feet of this world. This is considered this material world is considered as ocean of misery, right? Sufferings. And here consider here compare is a lotus feet of the Lord is considered as a boat. So who have accepted the boat of the lotus feet and taking shelter of the Lord? Um, yeah, Murari, the enemy of Mura demon. So this ocean of the material is like the water contain a calf's hoof prints. Not even a cow's, it's just a calf. So it's that much easy for them, those who taking shelter, and they easily cross this ocean. Okay, so we'll hear something. Let's see. It's 1 hour. Keshav Maharaj or Amog Leela Prabhu. Let's see. Nirjal Ekadashi is coming up. He's giving some practical tips. Friday is Nirjal Ekadashi. Want to hear that? We can hear that. But anyway, it's all about Ritvik only is coming here now. How to deal with negative thoughts while chanting? Question and answers. नरसिंह भगवान की अनसुनी लीलाएं. Let's hear that.
what is Ansuni Narsiya Katha. But that may be from some Purana. Oh, yeah, no, I heard that. Maybe some other video. When will Krishna come in our life? Sunday lecture. Okay, we can hear this. ऑलराइट, हाँ बढ़िया जी। ओके, हालांकि नया साल आ रहा है और हमारा नया साल Okay, 1 minute, let me share. नहीं है, वैसे ये तो पाश्चात्य जगत का नया साल है, पाश्चात्य संस्कृति का नया साल है, लेकिन हमारा नया साल है गौर पूर्णिमा पे। गौर फरमाइए, यस। तो इसलिए वो हमारा नया साल है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए, बेहतर मनुष्य बनाने के लिए, बेहतर वक्त बनाने के लिए हमें तो मौका चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये नया साल मना लेते हैं। हालांकि नया साल हमारा है नहीं, ये पाश्चात्य जगत का जो नया साल है ये पतझड़ के मौसम में आता है, सर्दी में जब सब लोग ठुठर रहे होते हैं तब आता है, रात के समय आता है, रात के 12 बजे जब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस एक्टिव हुए होते हैं, उस वक्त नया साल आता है। लोग वेट कर रहे थे 12 बजने वाले, 12 बजने वाले, जैसे ही 12 बजकर 1 सेकंड हैप्पी न्यू ईयर। पर हमारा जो सनातन संस्कृति का नया साल है वो गौर पूर्णिमा पे आता है, जब प्रकृति बड़ी खिली खिली होती है, फूल खिले होते हैं, गुलशन गुलशन, तब आता है नया साल आता है। प्रकृति बड़ी खुश होती है, तब आता है नया साल। दिन के समय आता है, ब्रह्म मुहूर्त में आता है, सूर्योदय के साथ आता है, होता है नया साल। लेकिन ये ऐसा नहीं रात को 12 बजे जो है हम नया साल मनाएंगे। बट एनीवेज हम लोग फिर भी नया साल चलो मना लेते हैं, ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ और बढ़ोतरी कर सकें, और हम अपना 2.0 यानी कि अपग्रेडेड वर्जन बन सकें। तो ये करने का एक अवसर है, उस तरह से हम नया साल चलो मना लेते हैं। किसी का हमारे घर में जो कैलेंडर टंगा हुआ है उसके अनुसार अब नया कैलेंडर आएगा, पुराना कैलेंडर जाएगा। इस्कॉन के बड़े सुंदर सुंदर कैलेंडर होते हैं राधा कृष्ण के। अब नया कैलेंडर में नई नई तस्वीरें, नए नए दर्शन, वाह जी वाह, क्या बात है, अद्भुत। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि नया साल आ गया। तो नए साल में कौन कौन चाहता है कि अपना अपग्रेडेड वर्जन बने? नहीं चाहते, ज्यादा कहता है क्यों हमें बदलना चाहते हो आप? हम जैसे थे 2024 में ऐसा ही हमें रहने दो जी, क्यों आप हमें हिलाना चाहते हो? देखो वैसे ही माइक सिस्टम वैसे हिला हुआ है, वो हिले, हम क्यों हिले, है कि नहीं? हरी हरी, हरे कृष्णा, अरे वाह वाह, हरे कृष्णा। ओके 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 ओके, ये अच्छा है, ठीक है, इसी में लगा दे, हो गया जी, हो गया, नाइस। साउंड के साथ हमारा पुराना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करता ही करता है। हम लोग पहले ड्रामा करते थे ना, जब स्टेज के ऊपर, स्टेज के पहले चेक करेंगे, चेक चेक चेक, बढ़िया काम कर, स्टेज पे उतर के गायब। कुछ तो है, बढ़िया से बढ़िया सिस्टम ले लो, सोनी ले लो, माहिवा ले लो, कोई काम नहीं करना। बट ठीक, कोई बात नहीं, अब जो है कर्मों के फल भोगने हो तो क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, सो हाउ टू बिकम 2.0 वर्जन, हमारा हम और इंप्रूव वर्जन अगले साल कैसे करें, उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो नंबर 1 सूत्र है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेहतर वर्जन बने, उसके लिए सबसे पहली चीज है इच्छा। क्या है? इच्छा। इच्छा एक ऐसी चीज है जिसमें कि ना भगवान में इंटरफेयर नहीं करते, वो हमारे पास ही वहन रखे, इच्छा। तो इसीलिए अगर इच्छा ही नहीं है, अगर आपने आपको इंप्रूव करने की, आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा चैंटिंग इंप्रूव हो, तो आपकी चैंटिंग कभी क्या सैकड़ों जन्मों में इंप्रूव नहीं होने वाली। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि हम कुछ पढ़ें, तो आप कभी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि समय निकले, तो समय निकलेगा ही नहीं। देखो समय कभी निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। कभी समय नहीं आएगा हाथ जोड़ के खड़ा होगा, मैं समय हूं, मुझको भगवद गीता पढ़ने में लगा दो, मुझको बी.आर. चोपड़ा के महाभारत से टाइम मिल गया है, मैं समय हूं। हुआ कभी ऐसा? होगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला।
समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जैसे 14 जनवरी को लोग अपनी उसके लिए निकाल लेते टाइम, किसी मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, जाना है किसी के साथ, जाने दो मुझे जाना है, जो वादा किया वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी, जाने दो। तो अगर जाने दो की इच्छा होगी तो ही तो जा पाओगे आप, अगर बढ़ने की इच्छा होगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा बेसिक जो चीज है अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करनी है वो है इच्छा। क्या आप में इच्छा है खुद को इंप्रूव करने की, या फिर एक जो ऑटो पायलट मोड जो लाइफ में चल रहा है चलाते रहते हैं, सुबह उठना है, मंजन करना है, उसके बाद अपना हरे कृष्णा करना है, सुबह संसार धावान नमस्ते नरसे वृंदाय तुलसी देवाय हरे कृष्णा राम राम श्री गुरु चरण पद्मा महाप्रसादे गोविंदे, हो गया जी। तो एक डिफॉल्ट मोड में चाहे तो हम भी लाइफ जी सकते हैं, राइट। क्या हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं, पढ़ने को, चैंटिंग करने को, अपने रिश्ते सुधारने को, भगवान के साथ और करीब बढ़ाने को, क्या इच्छा है? अगर इच्छा ही नहीं है फिर तो क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपना बेटर वर्जन बनना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इच्छा। अब ये इच्छा वाला कहां से आती है? क्या इच्छा के कोई कैप्सूल्स आते हैं, रैनबैक्सी के, सिप्ला के, डॉक्टर मोरपेन के? इच्छोसिन और इच्छासिन, इच्छामोक्सिसिलिन, ये कहां, ये तो कोई कैप्सूल भी नहीं आते। तो बोला इच्छा कहां से आती है? इच्छाएं संगति से आती है। इच्छाएं कैसे आती है? संगति से। जो आपके अंदर इच्छा नहीं है ना वो इच्छा आ जाती है, कैसे? संगति से। तो इसलिए अगर हम सत्संग में रहे हमेशा तो हमें वो इच्छा आएगी। जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। हाँ, तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर छत पे, ऐसे यहाँ पर हवाओं के बीच में, सर्द हवाओं के बीच में, वाह क्या बात है, दिलो जिगर लो जान लो, क्या बात है। पर ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसे भक्तों के बीच में हमें बैठ करके हरि कथा बैठ सुनने का, कुछ विवेचन करने का मौका मिलता है, तो बड़ा सौभाग्य है। तो इच्छा भला कैसे आती है? संगति से। तो संगति को लेकर हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये चीज है। सेकेंड है, अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो भी एक्टिविटी है ना उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। यानी कि ना आपकी आइडेंटिटी जिसकी तरफ होगी उस तरफ आपकी इच्छाएं होंगी। जैसे ना स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों? क्यों? इसे लड़के से पूछो तू क्यों, तू क्या है, हु आर यू, तू कौन है? मैं लड़का हूं। अच्छा तो वो कहते वो लड़की। अच्छा तू? लड़का। और वो? लड़की। तुम्हारी आइडेंटिटी ही जब लड़का लड़की होगी तो लड़के का लड़की से आकर्षण होगा। लड़की से पूछो तू कौन? मैं लड़की। अच्छा वो मुझ पे लुढ़का। आइडेंटिटी ही जब वो बोली है तो भैया और कहा, इच्छाएं तो वहीं जाती है जहां आपकी आइडेंटिटी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर आते ही सबसे पहले शुरुआत किस पे हिट करते हैं? आइडेंटिटी पे। तो शरीर नहीं है तो आत्मा, ये भगवान ने किस पे हिट किया? आइडेंटिटी पे। कभी भी लगता है प्रभुपाद जी के लेक्चर बार बार बात क्यों बोल रहे हैं? सो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो ये बात प्रभुपाद जी बार बार क्यों बोल रहे हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्यों? क्यों प्रभुपाद जी किस पे हिट कर रहे हैं? आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हिट होगी तो इच्छाएं हिट हो जाएंगी। तो इसलिए आइडेंटिटी। सो इन केस यू वांट टू बिकम से फॉर एग्जांपल यू वांट टू इंप्रूव योर रीडिंग, तो अब ये मत बोलिए मैं 2025 में रीडिंग करूंगा, नहीं, बोलिए इन 2025 आई विल बिकम रीडर। एक है रीडिंग, एक एक्टिविटी है, मैं एक अलग व्यक्ति हूं, ये व्यक्ति करेगा रीडिंग, ये व्यक्ति करेगा चैंटिंग, तो मैं अलग, वो एक्टिविटी अलग। पर अगर हम इसके बजाय ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि मैं रीडिंग करूंगा, आई विल बिकम रीडर, आई विल बिकम अ गुड चैंटर। आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ उस एक्टिविटी को मिलाया, उससे उस एक्टिविटी के अंदर और जान आती है, क्योंकि अब आपने अपनी आइडेंटिटी ही उसके साथ कर ली। इसीलिए तो इससे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को हिलाइए, बहुत जरूरी है।
जैसे ना जैसे कि वेक्टर होता है ना, वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका सब चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। और डायरेक्शन का ओरिजिन कहां होता है? हमारे मैं के अंदर हमारी सारी इच्छाओं की डायरेक्शन है। मैं चेंज हुआ, इच्छाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ऐसा, दैट्स सेकंड थिंग। थर्ड, लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आइए। बड़े चेंजेस देख करके ना हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार इतना कौन करेगा भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कहां ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अरे तो बहुत ज्यादा ही हो गया। रोज आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। जैसे अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हैं, हर रोज 1%, यानी आज आप जितना है कल आप बन जाएंगे उसका 1.01 वर्जन। दैट मींस यू आर ओनली इंप्रूव्ड फॉर हाउ मच परसेंटेज? ओनली 1%। 1%। इस तरह करके अगर आपने रोज 1% इंप्रूव किया बस, ठीक है। सो 1.01 रेज टू द पावर 365 कितना हो गया अभी? हैं जी? वाह, गलत जवाब देने की भी कला होती है, देखो क्या 1.01 रेज टू द पावर 365 इज 37 और 38, 37 पॉइंट समथिंग, मोटा मोटा 38। यानी कि रोज अगर आप 1% इंप्रूव करते हैं अपने वर्जन, अपने करंट वर्जन का, अपनी चैंटिंग का सिर्फ 1% इंप्रूव, अपनी हेल्थ का 1% इंप्रूव, रिश्ते नातों में 1% इंप्रूव, अपने व्यक्तित्व का 1% इंप्रूव करते 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 1.01 रेज टू द पावर 365 बिकम्स 38। यानी कि आप जहां पर हैं इसका 38% आप और बढ़िया हो जाएंगे इन 1 ईयर। और आज से हम 38% और बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। ऑन द अदर हैंड, अगर रोज आप सिर्फ 1% घटते हैं, ओनली 1% घटते हैं, यानी आज आप जितना है, आज आप अगर 1 है तो कल हो जाएंगे आप 0.99। तो 0.99 रेज टू द पावर 365 कितना हो गया ये? 0.03। यानी कि आप आज का 3% रह जाएंगे 1 साल के बाद। तो रोज हौले हौले घटना ये भी बहुत घटिया बात है, लेकिन रोज हल्के हल्के इंप्रूव होना, दैट्स वेरी गुड। लाओ जी, सर्द मौसम में माइक को लग गई सर्दी। ओके, हरे कृष्णा। अरे तो और बढ़िया, अद्भुत। हरे कृष्णा। आइए कीर्तन करें। और कोई तीसरा है तो देखते हैं। मैं इशारों में लेक्चर दूंगा, आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है? आ गया समझ आ गया ना? बस, एनी क्वेश्चंस? ओके। ये देखो, जो लोग ना आपको बहुत सारी बात मिलते हैं ना, वाले को बच्चा है, छोटा है, 1 साल बाद 2 साल बाद मिला, तो दूसरे लोग बोलते हैं कितना बड़ा हो गया, ये चुन्नू सा था हमारी गोद में करते थे, निकल आया जी, क्या बात है, ये तो अंकुर था, पेड़ बन गया, अब उसका नाम चेंज कर दिया आपने। नहीं जी, अभी भी उसका नाम अंकुर ही है। कहते लेकिन ये तो अंकुरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो हमसे बोले, हम क्या पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, चेंज हो गया, हम तो सेम है, हम तो रोज देखते हैं अपने आपको शीशे के अंदर, आई एम सेम। लेकिन ना एक्चुअली हम लोग इंप्रूव कर रहे होते हैं, बड़े हुए हैं, हम बढ़ते हैं उम्र में, कद में बढ़ते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देखता है ना, वो कहता है अरे कितना बदल गए। तो ये बदलाव तो होता है, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हौले हौले अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करना चाहिए। बड़े क्रांतिकारी हम कुछ बदलाव लेकर के आए, इतना तो हम ना कर पाए, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस लाइफ में लेकर के आने चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, इसलिए थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचो छोटे से शुरुआत करो। जैसे भैया मंदिर बनाना था हैदराबाद के अंदर,
हमें बड़ा मंदिर बनाना है, कब? कल बनाना है? नहीं, थोड़ा 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 हर रोज बनाना है। हर रोज एक दीवार बनेगी, आधी दीवार बनेगी, किचन बनेगा, ऑल्टर बनेगा, हौले 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 हौले। और लो जी, आ गया गौर पूर्णिमा 2025, मंदिर बनकर तैयार हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, अति उत्तम। पर धीरे 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 करते 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 मंदिर में। और कोई बहुत से बात है, अरे मंदिर यहाँ तक पहुंच गया। हाँ बस कर रहे हैं जी, हौले हौले। लेकिन रोज थोड़ा 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 करना चाहिए। ऐसा कोई दिन ना जाए जहां जिस दिन हमने कोई इंप्रूवमेंट की ही नहीं ना, हर रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इसलिए आप जो नए साल के रेजोल्यूशंस लेते हैं, हम ये करेंगे, वो इसीलिए रेजोल्यूशन आपके पूरे साल की प्लानिंग में होने चाहिए, कर देना चाहिए। एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज सब्सटैंशियल। जो चीज ग्रेजुअल होती है वो सब्सटैंशियल होती है। जो एकदम से ठक्का देना होती है वो ठक्का देना चली भी जाती है। जैसे ऐसा जो प्यार होता है, शिद्दत वाला प्यार होता है, नैन मिले दिल खिले, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो जो होता है नैन लड़ जाएंगे हैं, तो मनोमा कसक कोई भी करे तो एक बार तक कसक होती है, कसक निकल भी जाती है ऐसे। यार तुम्हारा बड़ा प्यार था यार, वहां शादी से पहले तुम बोला करते थे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ करके ले आऊंगा। सेम बंदा शादी के बाद बाजार से 2 किलो आलू नहीं ला पाता। पत्नी बोलती रहती, तुमने बोला था मेरे को मैं चांद सितारे तोड़ करके लेके आऊंगा। मैंने चांद सितारे बोलते, मैंने आलू कभी नहीं बोले थे। इट वाज नेवर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब चुपचाप मेरे को इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, देखने दे, दफा हो यहाँ से। तो जो शिद्दत होती है ना, चक्कर देना पड़ती है, और शिद्दत चक्कर देना नीचे भी आती है। कई बार लोग शादी इसलिए कर लेते हैं, वो ना मेरे से सच्चा प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। वो क्या बोला, अगर तुम नहीं मिले ना मैं कुंवारा रह जाऊंगा, मैं ना ये चूल्हा ले लूंगा, तुम नहीं मिली तो। पापा वो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करेगा वो। और लो जी, शादी के 2-4 दिन बाद ये अपना आंसू दिखाते हैं, कहते हैं अरे तू तो राक्षस है अंदर से। पूरी बाबा, क्योंकि एक क्लास होती है उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो खुद से इतना प्यार करते हैं कि आपको पाने की शिद्दत में वो कुछ भी करते हैं, इतनी बढ़िया नौटंकी करेंगे ना, लगेगा यार ये सच्चा प्यार है। यस यस, ये मेरा सच्चा प्यार है, ट्रू लव, ट्रू लव। ये संसार के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत मुश्किल है, वेरी रेयर। तो इसीलिए जो चीज चक्कर देना होती है वो चक्कर देना नीचे भी चली जाती है। पर जो हौले हौले होता है, जैसे हमारा और भगवान का प्यार कैसे है, हौले 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 हौले। कितनी मंगल आरतियां, कितने नाम, कितने व्रत, हौले हौले होते 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 जो होता है उसको सच्चा प्यार बोलते हैं। तो भगवान के साथ हमारा प्यार ऐसे ही है, होते 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 सालों साल बीत जाते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, फिर जो है रोंगटे कहीं खड़े होने शुरू होते हैं। अभी तो रोंगटे खड़े नहीं होते, बिछे ही हुए हैं, उठो पढ़ो तो आता है। चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन किया तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखते हुए तो जग जग ग कहते हुए उनके रोंगटे खड़े हुए। अच्छा, हमारे रोंगटे देखें क्या हाल चाल है भाई। रोंगटों कभी तो तुम भी खड़ा हुआ करो यार, सर्दी में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हरि कथा में हरि नाम में नहीं, वैसे सर्दी में खड़े होते हैं। लेकिन होते होते होता है। तो इसीलिए लाइफ में जो चेंजेस हम ग्रेजुअली लेकर के आते हैं वो भी टिकते हैं, लेकिन जो एकदम से लेकर के आते हो एकदम से वापस हो जाते हैं। हम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह उठे कल उठ लिए, परसों फिर वही 8 बजे। तो इसलिए धीरे धीरे करके चेंजेस लेकर के आने चाहिए लाइफ के अंदर, हौले 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 हौले। घबराने नहीं चाहिए, सोचना चाहिए पता नहीं कब ये होगा कब होगा, नहीं, हौले हौले होता है। डोले बनते हैं ना, हौले हौले बनते हैं। ऐसे नहीं हमने वो प्रोटीन शेक पिया और फिर कल निकला है कि सुबह उठे स्पाइडरमैन की तरह देखे, या बिग चेंज, ऐसा होता है? नहीं होता रे। वो स्पाइडरमैन के साथ ही होता है, जगह फोटो खींची, मकड़ी काट ली उसको, उसके अंदर डीएनए चेंज हो गया, पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ नहीं होता। डोले बनते हैं धीरे धीरे, डोले बनाएंगे, डोली बनेगी, डोली उठाएगा, हौले 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 होता है सब कुछ भाई, ग्रेजुअली। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भाई अब कितना टाइम लगेगा। जैसे कई लोग ना अगर कुछ करते हैं छोड़ देते बीच में, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दिया। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं कहता, ये तुम्बा तो निकला ही हुआ है, ये पोस्ट वेट कब होगा प्रीपेड,
छोड़ दो यार, एक्सरसाइज कर रहे हो, दर्द भी हो रही है, छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं। या आपके सामने को मूली का पराठा खा रहे हैं, तो यार हमारी आंखों के सामने क्यों क्यों क्या मिलता है आप लोगों को, लाओ एक हमें भी तो। फिर सारा हो गया जी, डाइटिंग था तहस नहस। आज चीट डे, टुडे इज अ चीट डे। वो चीट डे क्या होता है, बाकी तो सारे चीट डेज होते हैं उसके बाद से। जिससे हमें धीरे धीरे इंप्रूव करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको कैसे किया जाए, हाउ टू डू दिस, ये ग्रेजुअल चेंजेस वाला लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें 4 चीजें। एक तो जो चीज आप करना चाहते हो उसको एक्सेसिबल रखो, मतलब वो चीज आपकी हासिल करने की रेंज में हो। जैसे अगर आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हो तो फिर ना वो आपके हाथ भर की दूरी पे हो। अगर आपने उसको शेल्फ पे रख दिया ना, तो ये हाथ जो है कभी हो सकता है वहां तक पहुंचे ही नहीं। चलते 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 चलते, हेलो जी, उसका यूटर्न हो गया, मैं बिजी हो गया, लो जी। So it should be accessible. अगर गीता पढ़ना चाहते हैं, should be accessible, accessible, yes. सेकंड है, उसको ग्लैमरस बनाना होगा। हर वो चीज जो ग्लैमरस है हमको अच्छी लगती है, तो अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने को ग्लैमरस बनाइए। उसमें आप वैक्स के हाइलाइटर लेकर के आइए, अमेजोन से बढ़िया बढ़िया बुक मार्क्स लेकर के आइए, साफ टेबल हो, उसमें चादर बिछी हो मखमल की, वेलवेट की, उसमें ऐसे लैम्प हो, चारों ओर वातावरण हो, ठीक है जी। अच्छा सा उसमें एक ऋषभ रिकीराम का सितार बज रहा हो, मौसम बना दिया जी आपने, क्या बात है। आओ भाई गीता पढ़े, रिकी राम का सितार सुनते हुए चलो जी हो जाए। कहाँ है समा बना दिया आपने, ग्लैमरस बना दिया उस चीज को, हाईलाइट करें, उसके मैसेज बनाए, पोस्टर बनाए, भेजें, ऐसा करें। तो जो चीज ग्लैमरस होती है अच्छी लगती है, तो हम करना चाहते हैं। तीसरा, उसको आसान करिए। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मान लो कई लोग ना गीता नहीं पढ़ पाते, कहते हैं सीधे फिलॉसफी है भाई, बहुत हैवी ड्यूटी है, समझ ही नहीं आता। इसमें 13वां अध्याय तो अरे भाई साहब, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, अरे भाई ये कौन कौन आ गए एक साथ, बंदा डर जाता भाई। और संस्कृत, अरे भैया संस्कृत तो बहुत ही घमासान है, पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। अरे कहाँ भाई, भक्ति कराओ, ये विभक्ति मत सिखाओ, ये विसर्ग, अरे लंग लकार, लोट लकार, रिट लकार, तो फिर आप आसान, यानी कि वो पढ़ना शुरू करें जिसमें आपकी रुचि। इवन आप अमर चित्र कथा से शुरुआत करते हैं, क्यों होता क्या ना कि वो जिम्मेदारी में आ जाओ, बीवी बच्चे घर गृहस्थी, कूं बाजार से सामान लेकर के आना, कुछ बनाना खाना पीना, कुछ करते कराते ना वो एप्टीट्यूड ही खत्म हो जाता पढ़ाई लिखाई का। तो उस एप्टीट्यूड को जगाने के लिए एनीथिंग व्हिच कनेक्ट्स यू स्टडी, चाहे अमर चित्र कथा की कोई कॉमिक लेकर के आइए, नो प्रॉब्लम, लेकर के आइए, पढ़िए। कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आपका जब रीडिंग का एप्टीट्यूड जग जाए, फिर गीता पकड़ लीजिए, पढ़िए, पर डू दैट विच इज इजी फॉर यू। मुश्किल चीजें नहीं करनी चाहिए शुरू के अंदर, उससे ना इंस्पिरेशन नहीं आती, प्रेरणा नहीं आती, ऐसा, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आप करें उसको रिवॉर्डिंग बनाएं। अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं, आप, मैंने आज 1 घंटा भगवद गीता पढ़ी, मैंने आधा घंटा भगवद गीता पढ़ी, इसलिए आज मैं गजरेला खाऊंगा। रिवॉर्डिंग जो एक्टिविटी रिवॉर्डिंग होती है, उससे आप फिर आइडेंटिफाई करते हो। जैसे जिस चीज के लिए आपको तारीफ कर दे, माता जी क्या आपने मक्की की रोटी सरसों साग बनाया, माय गॉड, मुझे लगा था आज तो उंगलियां खा जाऊंगा, नॉनवेज भी हो जाएगा अपना, नो मीट ईटिंग तो है आज, इतना टेस्टी, कैसे? उसका ना आइडेंटिफाई करिए, अरे मक्की की रोटी सरसों साग में इतना अच्छा बनाती हो क्या, प्रभु जी क्या बोल दिया, वही गानों मुंह से रहता है, मक्की सरसों का साग, मक्खन, गुड़, वेरी गुड। तो जो चीज रिवॉर्डिंग होती है ना, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, ऐसा। जैसे अगर आप कुछ जो करना चाहते हैं हल्का सा भी कर पाए, शाबाश, हमें पता था प्रतिभा तुम्हारे अंदर है, भली प्रतिभा माता जी बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन शाबाश, मेक इट रिवॉर्डिंग,
तो जो काम आप करना चाहते हैं उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या? इट शुड बी एक्सेसिबल। दूसरा, इट शुड बी ग्लैमरस। तीसरा, इट शुड बी इजी। और चौथा, इट शुड बी रिवॉर्डिंग। और इसका उल्टा है, जो आप अब से नहीं करना चाहते ना, इसका उल्टा करेंगे। जैसे फोन है, हम फोन का इस्तेमाल क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ना ये एक्सेसिबल है, हमेशा अगल बगल में ये पड़ा ही रहेगा, ये हाथ की दूरी पे होता है हमेशा। आइस फाइस जपा ये ओ हाँ। इसीलिए अक्सर लोग देखो आपको फोन में मिल जाते हैं। फोन छूटेगा? नहीं छूटता जी, ये तो डीएनए का हिस्सा है। यस, ये कहाँ छूटने वाला है? ऐसे 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 ऐसे। सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एक ही कॉमन विलन है, ये। तो बोले लेकिन प्रभु जी आपका तो ब्रह्मचारी वाला है, ये तो बहुत साधु दिख रहा है। बदमाश है ये, रावण है रावण, बाहर से चोला इसका ये है, अंदर तो वही है बदमाश। इसलिए इसको इनएक्सेसिबल बनाइए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, इसको ना दे ट्रीट दिस एज लैंडलाइन। लैंडलाइन फोन आप हमेशा सब जगह घूम के नहीं चलते, लैंडलाइन एक जगह होता है। इसके स्टैंड होते हैं, अमेजोन पे जाइए, इसके आते हैंगर आते हैं ऐसे। आप कहीं ना कहीं उसको दीवार पे लगाइए, अलमारी पे लगाइए, इसको उस पर रखिए। इस्तेमाल करना, निकाला, टुंग 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 टुंग, जो करना है इसको और इसको वापस रख दो उसके अंदर। That's it. और then you are moving around. That's it. हमेशा अगर ये एक्सेसिबल रहेगा ना, तो आप इसको फिर ऐसे से करोगे। देखो भले आप इसका इस्तेमाल करो दिन भर, लेकिन कम से कम दिन में हमें 1 घंटा फोकस वाला निकालना चाहिए। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करें। गलत गलत गलत, यही तो गलत है। पूरे दिन टपोरीगिरी में 1 घंटा फोकस वाला निकालना चाहिए, ये विचारधारा गलत है। नहीं, पूरा दिन फोकस में आधा घंटा टपोरीगिरी निकालेंगे, ये होना चाहिए। हमारा वैल्यू सिस्टम भी गलत है। कहते नहीं पूरे दिन टपोरीगिरी, बीच में 1 घंटा। कितना अच्छे विचार हैं हम लोग के, ये वैल्यू सिस्टम ही गड़बड़ है। पूरा दिन फोकस रहना है, बीच में टपोरीगिरी। ये थोड़ा तुम आप देख लिया यूट्यूब शॉर्ट्स, हमने थोड़ा देख लिया कौन सी मूवी का ट्रेलर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, हो गया, खत्म करो। तो इसलिए इस तरह से करना चाहिए। तो इससे फोन शुड नॉट बी एक्सेसिबल। हमेशा जो है ये हाथ की रेंज में नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द रीजन आप देखो, ये बहुत कॉमन जपा हो गया आज इस फोन के अंदर, ये वाला जपा। अरे 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 कितना 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 कितना, अरे 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 अरे। ऐसे तो आप 100 जन्म कर लो, कृष्ण प्रेम ना मिलने वाला। फिर बोला हमने किया है हरि नाम, कुछ नहीं होता। जैसे तुमने किया ना बेटा, तो 100 करोड़ जन्म में कुछ नहीं होता तुम्हारा। अरे 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 अरे, लेकिन ऐसे तो दो कितनी ही बार कर लो, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो हरि नाम, ये वैसे ही बोलते रहते हैं, ईशोग्राम को बोलते रहते हैं हरि नाम लीजिए, ये होता है, और कुछ नहीं होना। अच्छा बेटा, तेरा मैं सीसीटीवी तेरा कैमरा दिखाओ जरा, सच में जपा क्या है। क्योंकि हम इस अवसर आपको रखते हैं एक्सेसिबल। जपा करते वक्त पहला काम बीड बैग में हाथ डालना है। कौन कौन मानता है इस बात को जी? गलत गलत गलत। स्टेप 1, ये बदमाश को 108 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ। इसने भजन खराब किया पूरे इस्कॉन डिवोटीज का, सबसे खतरनाक है ये। और कोई भेदभाव नहीं करता, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का मैं सबको निपटाऊंगा, ऐसा है। समदर्शी है, समदर्शी, मैं सबको बर्बाद करूंगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं करूंगा बर्बाद करने में। आई विल स्पॉइल एवरीवन। आज मायावादियों के अंदर मायावाद खत्म कर दिया इसने। त्रिपुरधारी इतने हैं, उनके अंदर मायावाद भी नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण। स्टॉप हियर।